Hare Namaste Saraswati Shri Krishna Sadhu Shri Krishna Shri Krishna Sadhu
हरे कृष्ण। Public stuff. Zoom पे लगा आपने? ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानमयीश्वरचक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं भजनाथां सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त श्रीराधा नमस्ते सत्यकांचन गौरांगी राधे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवं धर्मानन्दं माधवं श्रीचतुर्वेश्वरं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् नमस्कृताय शिवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भजते उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च हरे कृष्ण everyone. Hare Krishna. So thank you everyone for coming. आज आप में से कोई ऐसा है जिसको हिंदी नहीं आती? Anybody who doesn't understand Hindi? Is it okay to speak in Hindi? Is it okay to speak in Hindi? Prabhu, can you ask Prabhu, if we can speak in Hindi? Ask someone. Huh? Is there anyone जिसको नहीं आती, बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती? हिंदी is okay? Okay. ठीक है. Okay, so आज हम लोग किस पे बात करेंगे? We will talk about New Year resolution. नए साल में हमें क्या करना चाहिए? तो पहले तो I want to thank everyone for giving me opportunity to do this as a service. I'll do it for my own purification. So हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? पहले सबसे पहले we'll discuss importance of time. हम लोगों को पता चलेगा कि टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, so that in नया साल, it's a new year today, 1st of January. So what do we do today, ना? So why do we do something we do? हमें क्यों करना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं? तो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम पहले देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि नया साल हमें क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए, फिर देखेंगे न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमें क्यों बनाने चाहिए every year. Why do we have to do the new year resolution every year? और फिर हम देखेंगे कि why new year resolution actually fail. So I've listened to few lectures from different Prabhuji's, and one of the things that I've learned is importance of time. सबसे अगर हमें पता चल जाएगा टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम अपने आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएंगे ना. वरना क्या होता है, आज बनाया, आपको पता है सबसे ज्यादा व्हाट इज द बिगेस्ट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेजोल्यूशन किस चीज के लिए बनते हैं हर साल? ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन किस चीज के लिए होते हैं? हेल्दी ईटिंग, यस, बट हेल्दी ईटिंग फॉर व्हाट? वेट लॉस, है ना. 95% ऑफ टोटल रेजोल्यूशन, जो 95% है वो सिर्फ वजन कम करने के लिए होते हैं, है ना. और आपको पता है उसमें से कितने रेजोल्यूशंस एक्चुअली people go through with it? कितने रेजोल्यूशन होते हैं जिसमें लोग पूरा वो करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं उसको? 0.8%. Not even 1%. Not even 1%. 1% लोग ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं फॉलो कर पाते हैं. There is something, ना, कुछ तो है इसमें, कुछ तो है जिसके कारण we can't do it, ना, कुछ तो है. तो क्या है वो हम आज देखेंगे, ना. So, श्रीमद् भागवतम 2.3.17 में बोलते हैं, आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्थं च यन्नसो तस्यर्थे यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया. इसका क्या मतलब है? सूरज के उगने से, है ना,
with every rising of the sun, हर बार सूरज उगता है, सूरज डूबता है, what are we losing? हमारी life, है ना? So why do we celebrate it? You know, अगर हम बोलते हैं Happy New Year, but what we are actually celebrating, we are 1 year closer to death, but we celebrate it. अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू. अब कभी नहीं बोलते कि और तेरे को पता है 1 साल और कम हो गया तेरा. We don't say that, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें बोलते हैं कि हर एक सन के for with every rising and setting of the sun decreases the duration of life for everyone except for who? Except for who? Who is in spirituality? जो भगवान के ध्यान में है. Apart from everyone else, it is आयुर्हर्ति वैष्णव. तो कोई बोलेगा अच्छा तो डिवोटी तो मरते नहीं क्या? They do, but it's not similar. डिवोटी क्या करते हैं? We celebrate कि we are 1 year closer to going back home, back to Godhead. है ना? अभी क्या होगा? जिसने बहुत सारे पाप करे होंगे वो क्या करेगा? He is gonna, अगर उसको नेक्स्ट जन्म में डॉग की बॉडी मिलने वाली है तो क्या सेलिब्रेट करेगा? कुछ नहीं कर सकता. तो क्या करेगा? अरे आई एम 1 year closer to do what? To become a dog, है ना? 1 year closer to becoming a dog. That's not celebration. Celebration किसके लिए? Only for devotees. सिर्फ devotees के celebration है, बाकी किसी के लिए नहीं. So न्यू रेजोल्यूशन जो होते हैं, न्यू रेजोल्यूशन ऐसे होते हैं कि जैसे मैंने बोला ना कि कई लोग न्यू रेजोल्यूशन ऐसे बनाते हैं जिसमें किसी को कुछ पता ही नहीं रहता है. तो एक बार क्या हुआ, 3 दोस्त थे, 3 दोस्त और तीनों आर्मी में थे, तीनों, है ना? सो दे वेंट, अलग अलग जगह उनकी पोस्टिंग थी. तो एक फ्रेंड था, वो हर फ्राइडे को एक बार में जाके बैठता था और 3 बियर ऑर्डर करता था, 3 ड्रिंक्स ऑर्डर करता था. तो बारटेंडर पूछता आप 3 ड्रिंक क्यों ऑर्डर करते हो? बोले मेरे 2 दोस्त हैं, एक इस चौकी पे है, दूसरा उस चौकी पे है, तो मैं उनकी याद में एक ड्रिंक उसके लिए, एक ड्रिंक उसके लिए, ड्रिंक मेरे लिए पीता हूँ. सो आफ्टर सम टाइम्स उसने आया एंड ही ओनली ऑर्डर्ड 2 ड्रिंक्स. तो उसको लगता है एक दोस्त टपक गया, है ना? उसको ऐसा लगा. तो बोले अच्छा, आई एम रियली सॉरी टू हियर, यू नो, आपका क्या हुआ आपके दोस्त को? बोले नहीं, मेरे दोनों दोस्त ठीक हैं. बोले फिर आपने 2 ही ड्रिंक क्यों ऑर्डर करे? बोले मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैंने दारू छोड़ दी, सिर्फ मेरे 2 दोस्त थे. सो ही इज ऑर्डरिंग फॉर दोस टू. सो सम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आर लाइक दैट. लोगों को लगता है कि कल मैं अपनी इन-लॉज के घर पे था रात को, तो मैं उनसे पूछ रहा था आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? वन ऑफ द पर्सन सेज माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज टू मेक ए न्यू ईयर रेजोल्यूशन, कि मैं इस बार कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई प्रण लूंगा, है ना? सो अगर जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, तब तक हमें न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमारे नहीं होंगे. हम 0.8% लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन को करते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं. व्हाई? बिकॉज we don't understand the importance of time, है ना? So what we'll do is we'll start with Srimad Bhagavatam first canto, 13 chapter 17 verse. महाभारत का युद्ध खत्म हो गया and सारे के सारे कौरव मर चुके. 100 sons of everyone died. और गांधारी और धृतराष्ट्र कहाँ पर रह रहे हैं? राजमहल में रह रहे हैं. किनके साथ? पांडवों के साथ, जिन्होंने उनके सारे बच्चों को मार दिया, उनके साथ ही रह रहे हैं. नाउ हु कम्स? विदुरा कम्स. विदुर कौन है? एनीबॉडी नोज हु इज विदुर? हाँ, उनके ब्रदर, स्टेप ब्रदर है ना, धृतराष्ट्र के स्टेप ब्रदर. अब विदुर क्या है? विदुर यूज्ड टू बी एडवाइजर फॉर धृतराष्ट्र, है ना? सो वो आए एंड एवरीबॉडी वाज सेलिब्रेटिंग, ऑल द पांडवस, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे. वाह, यू नो, look who is here. Who is here is one of the devotee of the Lord is here, so we are very grateful. ऐसे बोला उनको युधिष्ठिर महाराज ने. तो उनको बोला कि जो डिवोटी होते हैं उनके चरण क्या होते हैं? उनके चरण होते हैं जैसे तीर्थ स्थान, है ना? तो जहां भी डिवोटी जाता है तीर्थ स्थान को लेके जाता है. जैसे शिला प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में पहली बार गए थे, टॉम्किन स्क्वायर में, उन्होंने ही डिड कीर्तन इन टॉम्किन स्क्वायर. तो अभी वहां पर क्या है कि काउंसिल ने क्या करा है, उसके पेड़ पे एक प्लाक लगा दिया है, उस पे लिखा है दिस इज वेयर शिला प्रभुपाद स्टार्टेड द हरे कृष्णा मूवमेंट. इट बिकम्स अ तीर्थ स्थान. तो यहाँ से अभी जो न्यूयॉर्क जाते हैं डिवोटी, वो क्या करते हैं? उस पेड़ की परिक्रमा करते हैं,
and which is really good. That means what does it mean? कि जो devotee होते हैं, they carry तीर्थ स्थान everywhere. फिर क्या हुआ? अब विदुर आते हैं, विदुर का क्या एक ही एजेंडा होता है वापस आने का. उसका ये नहीं था कि हाँ युद्ध खत्म हो गया, आई कैन गो बैक. उसका एक ही एजेंडा होता है टू हेल्प युधिष्ठिर, कि वो बहुत आसक्त है इसको, टू हेल्प हिम. सो क्या बोलते हैं, सॉरी धृतराष्ट्र है ना. सो श्रीमद् भागवतम 1:13-17 एवं ग्रहेषु सत्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामाद् विज्ञात कालः परम दुस्तरः. एवं ग्रहेषु सत्तानां. तो विदुर क्या बोल रहे हैं, सिर्फ और किसी से बात नहीं कर रहे हैं. खोमचे में लेके गए धृतराष्ट्र को, सिर्फ धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं. क्या बोल रहे हैं, एवं ग्रहेषु सत्तानां. जो अपने घर वालों से, आप अपने परिवार वालों से इतने ज्यादा अटैच्ड हुआ. प्रमत्ता नाम, प्रमत्त का मतलब होता है कि बिविल्डर्ड, एकदम पागल हो जाता ना आदमी. प्रमत्ता नाम तदीहया. तदीहया का मतलब होता है कि उन्हीं के बारे में सोचते रहते, अपने परिवार के बारे में, जो मर गए उनके बारे में. अत्यक्रामादि विज्ञात. अब क्या बोल रहे हैं कि अतिक्रम है ना. अतिक्रमात का क्या मतलब होता है कि टाइम निकल गया है. और क्या बोलते हैं, विज्ञात है, समय. अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज समय, समय क्या है. सही में क्या बोलते हैं, अत्यक्रमादि विज्ञात कालः परम दुस्तरः. अब सबसे पहली क्वालिटी क्या होगी टाइम की, इट इज अविज्ञात. अविज्ञात का क्या मतलब होता है, इनपरसेप्टेबल, यू कैन नॉट परसीव इट. जैसे नाखून बढ़ता है ना, नाखून बढ़ता है हमें दिखता नहीं, यू कांट सी नाखून बढ़ रहा है. इट्स इनपरसेप्टेबल. जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि अरे आपका बेटा इतना बड़ा हो गया एकदम से, हम लोगों को नहीं दिखा बड़ा होता हुआ, कोई बाहर से आता है उसको दिखता है. सो दैट इज कॉल्ड टाइम. सो पहली क्वालिटी टाइम की क्या है, हम लोग 5 क्वालिटी डिस्कस करेंगे टाइम की, और उससे हमें पता चलेगा कि हमें क्यों सीरियस होना चाहिए इसमें ना. तो पहली क्वालिटी क्या है, इट्स अविज्ञान. अविज्ञात. अविज्ञात का क्या मतलब हुआ, इनपरसेप्टेबल. आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते उसको, है ना. वो था ना कुछ हो जाता है सबके साथ, फिर सोचते हैं अरे ये कैसे हो गया, अरे ये कैसे हो गया. वो कौन सा सॉन्ग था, ये क्या हुआ कैसे हुआ, पीपल डोंट नो, है ना. तो अभी भी ऐसा होता है कि यार ये क्या हुआ यार, अभी क्या हुआ कि देयर वाज अ टाइम व्हेन हम लोग जैसे क्रिकेट खेलते थे ना, तो बॉल चली जाती थी किसी के पास, तो बोलते अंकल जी बॉल देना प्लीज. 2019 में मैं इंडिया गया, तो मैं बाहर जा रहा था, तो बॉल आई, तो बच्चे बोलते अंकल बॉल देना. तो अच्छा अंकल हो गया एकदम से. फिर मेरे को ये गाना याद आया, ये क्या हुआ कैसे हुआ ना. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आशा होती है ना, आशा. हम सबको कुछ आशा होती है हर चीज से ना. सबसे बड़ी आशा इंसान की क्या है, आई विल नेवर ग्रो ओल्ड. और दूसरी आशा क्या है, आई विल नेवर डाई, है ना. फिर क्या होता है, एकदम से क्या होता है, व्हेन वी बिकम क्या बोलते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस होती है ना, 35 को क्रॉस कर जाते हैं, तो एकदम से लगता है यार क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ, क्या कर रहा हूँ मेरी लाइफ के साथ. अरे मेरे अगर ये वाली जॉब करी होती तो अच्छा होता है. जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो सोचता है कि अरे यार मैं टीचर ही बन जाता है, क्या यार कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, बॉस जूते मारता है इधर से वो होता है. जो टीचर है वो कहता है यार क्या है, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चला जाता, बच्चों को मैं घुमाने नहीं ले जा पाता हूँ, इतना पैसा ही नहीं देती है गवर्नमेंट, है ना. सो हर किसी को ना मिड लाइफ क्राइसिस में होता है, उनको लगता है काश मेरे साथ हो जाता. ये क्यों होता है, बिकॉज समय, कालः परम दुस्तरः. काल जो है, समय जो है, इट्स अनपरसेप्टेबल, यू कैन नॉट परसीव इट. एक और कहावत है, वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा जाता है. वक्त दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है. सो टाइम है, इट इज वेरी 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 एक्सट्रीमली पावरफुल, बहुत पावरफुल है. अगर हमें पता चल जाएगा समय कितना पावरफुल है, तो हम लोग उसको वेस्ट नहीं करेंगे. तो हम लोग को क्या है कि whatever we did in last year, हमें कैसे पता है कि हम लोगों ने सही करा कि नहीं करा. सो जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है वो क्या होता है कि वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड हैव अ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट. जैसे होता है ना हमारे साथ, हमारे जॉब में भी क्या होता है, परफॉर्मेंस रिव्यूज होता है.
परफॉर्मेंस अप्रेजल्स भी कहते हैं उसको। जो मेरे को मैंने अभी लास्ट वीक मेरे 22 स्टाफ मेंबर्स का परफॉर्मेंस रिव्यू बनाया, लिखा एक्चुअली कि क्या करना है। तो वो जब मैं लिख रहा था तो मेरे को समझ में आया कि इस बंदे ने क्या क्या गलतियां करी है, इस बंदे ने कितना अच्छा काम करा है। मैंने अपना भी लिखा तो उसमें मुझे पता चला कि मैंने क्या अच्छा करा, क्या गलत करा। तो ये तो इसलिए हुआ कि हमारे जॉब पर है, लेकिन हमने लाइफ के लिए कभी करा ऐसा अपना परफॉर्मेंस रिव्यू? एंड दैट इज व्हाट रिजोल्यूशन शुड बी, कि हमें अपनी लाइफ में हम लोग कहाँ थे लास्ट ईयर और अभी हमारे पास क्या है ना। अगर कोई मुझे पूछेगा कि प्रभु आपने क्या करा, मैं बोलूंगा मेरे को तो ये भी याद नहीं है लास्ट वीक मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो मेरे को पूरे साल का कैसे याद आएगा क्या करा। सो देयर इज अ वेरी सिंपल वे। हम लोग क्या कर सकते हैं, बिकॉज कालह परम दुस्तरा, दुस्तरा का मतलब होता है इट्स वेरी, यू कैन नॉट, उसको पार नहीं कर सकते आप समय को। तो क्या करना चाहिए हमें, एवरी वीक संडे को, ये ब्रज बिहारी प्रभु की टीम है, एवरी वीक संडे को आप लिखो कि इस वीक में मैंने सब क्या अच्छा काम करा, मैंने क्या सीखा, क्या ऐसी चीज करी विच आई कैन चेंज अगले वीक में। तो आपने सपोज 5 चीजें लिखी, 5 लाइन लिखी उसमें ना अपने एक पेपर पे, एक बुक में, नेक्स्ट वीक वापस 5 लाइन लिखी। तो ऐसे करते करते 52 वीक्स में कितनी लाइन हो जाएंगे? कौन है मैथमेटिशियन यहाँ पे? 52 टाइम्स 5 कितना हुआ? 52 वीक्स होते हैं ना। व्हाट इज 52 टाइम्स 5? तो इतने अपने पास, इतने पॉइंट्स हो जाएंगे अपने पास। तो जब हम लोग नेक्स्ट ईयर 31st आएगी, वी कैन लुक एट दैट बुक एंड से, यू नो, आई हैव 265 पॉइंट्स, जिससे पता चलता है कि वेयर आई वाज एंड वेयर आई एम, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, वंस यू हैव दिस, आपके पास वो आ जाएगा तो आप देख सकते हो कि यार, और अगर आपने करा ही नहीं है तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर भी यही होगा। नेक्स्ट ईयर भी टेक एवरी डे एट ए टाइम, एक रोज एक दिन जैसा निकला वैसा। देन व्हाट विल हैपन इज वी विल नेवर इंप्रूव। परफॉर्मेंस रिव्यू में अगर मैं अपने स्टाफ मेंबर को सबको बोलता रहूं चलो कुछ भी कैसा भी काम करो, ये लो बोनस, ये लो बोनस, तो आपको क्या लगता है अगले साल वो काम करेगा? नहीं करेगा, इतना अच्छा नहीं करेगा जितना अगर करा। सो वक्त जो है वो क्या है, दुस्तरा, परम दुस्तरा। और वक्त का, टाइम का सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, अविज्ञात। अविज्ञात मतलब इम्परसेप्टिबल, यू कैन नॉट परसीव द टाइम। और शंकराचार्य जी ने लिखा था, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धोयति कृत्वा दंडम तथा तदापि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, अंगम गलितम, जब एज बढ़ती है तो क्या होता है, अपना शरीर गलने लग जाता है, वी डोंट हैव द सेम बॉडी। पलितम मुंडम, ग्रे हेयर, ये सिर्फ शादी के ग्रे हेयर नहीं है, ये एज के, शादी से ही हुए हैं क्या। अंगम गलितम पलितम मुंडम, ग्रे हेयर आने लग जाते हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, दशन विहीन मतलब दांत टूट जाएंगे, व्हेन यू ग्रो दांत भी चले जाएंगे। वृद्धो यति गृहीत्वा दंडम, छड़ी के सहारे चलना पड़ेगा, है ना। तथापि ना मुंचति आशा पिंडम, उसके बाद भी हमारी जो आशाएं है ना खत्म नहीं हुई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई काल इज परम दुस्तरा। तो हमें क्या करना है, और हमने पहले क्या देखा, आयु हरती वैकुंठ चाम, जिस हर रोज हम लोग मौत के निकट पहुंचना है, लेकिन जो भक्ति में लगा है वो क्या करेगा, he will take stock take of their life, profit and loss statements of their life। और उससे क्या होगा, we will हमें पता चलेगा कि जब मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, if I'm growing older, I should be becoming wiser, not अंगम गलितम। हमारा कंसंट्रेशन अंगम गलितम में नहीं होना चाहिए, हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए कितना हमारी कॉन्शियसनेस को हमने लिफ्ट करा है। तो क्या हुआ, तो ये कौन बता रहा है, विदुर बता रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र को। क्या बोल रहे हैं, एवं ग्रहेषु सक्ता नाम प्रमत्ता नाम तदी है अत्यक्रामादि विज्ञातम कालः परम दुस्तर। अब क्या है, धृतराष्ट्र का क्या सिंपल सा फंडा होता है, वो हमेशा उसको कुछ भी बोलते हैं। विदुर पहले भी एडवाइस देते थे, तो विदुर क्या बोलते थे, used to say, अरे अब क्या करूं विदुर, तुम बताओ मैं क्या करूं। That was his pet sentence, बताओ विदुर मैं क्या करूं, ठीक है। अब विदुर बिफोर, जैसे उन्होंने विदुर ने ये उनको बोला, उसके तुरंत बाद विदुर ने उनको ना एक सेकंड भी नहीं दिया कुछ रिफ्लेक्ट करने का। क्या बोला, विदुरस्तत् विप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत
राजन निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येतं भयमागतम्। कह रहे हैं विदुरस्तद्धि प्रेत्य, कह रहे हैं कि उन्होंने बोला, कुछ सोचने का मौका नहीं दिया, बोला धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र हम भाषता राजन, उनको क्या बुलाया, राजन। अब उसमें धृतराष्ट्र राजा थे क्या? कौन था राजा से? युधिष्ठिर महाराज राजा थे। तो क्यों बोला उन्होंने राजन? है सरकाज़म, है सरकास्टिक वे में बोले, अच्छा राजन है ना, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को राजा ही समझता था, वो अपने बच्चे के चक्कर में ना। राजम निर्गम्या शीघ्रम, निर्गम्या का मतलब होता निकलो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, घर छोड़ के भागो। कौन बोल रहा है? विदुर बोल रहा है धृतराष्ट्र। राजन निर्गम्यता शीघ्रम पश्येतम भयमागतम। अब ये सेकंड क्वालिटी है टाइम, भय। कहते हैं धृतराष्ट्र आप देखो, शीशा देखो, मिरर देखो, कितना डर है तुम्हारे चेहरे पे। और इस डर, ये जो दिस इज सेकंड क्वालिटी ऑफ टाइम। और ये जो मिड लाइफ क्राइसिस में बोल रहा था, दैट्स व्हाट हैपेंस। मिड लाइफ क्राइसिस में हमारे साथ ये होता है, हमारा भय। अगर हम लोगों को अभी भी भय लगता है कि मैंने ऐसा क्यों करा, कहाँ जा रहा हूँ मैं, हु एम आई, यू नो, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई मेरी तरफ देखता नहीं, कोई मेरी तारीफ नहीं करता, अगर हम इस चीज में फंसे पड़े हैं, इसका मतलब क्या है? काल है परम दूसरा, और दूसरा क्या है? भय मागतम। समय अपना दूसरा क्वालिटी दिखा रहा है, वो क्या है? भय। यू विल बी स्केयर्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, फिर क्या है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इनसिक्योरिटीज बढ़ती है। एंड यू कैन टेल, आपने देखो जो बुढ़े लोग होते हैं, दे आर वेरी केयरफुल, गाड़ी भी धीरे चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? क्योंकि दे आर वेरी केयरफुल। और कोई बोलेगा ये केयरफुल इसलिए है बिकॉज दे आर मोर वाइज। एक्चुअली नो, दे आर मोर फियरफुल। ये डर है। तो डर कहाँ से आता है? तजुर्बे से। तो कोई बता रहा था कि दिल और हार्ट में क्या अंतर है, पता? दिल और हार्ट में क्या अंतर है? दिल का मतलब हार्ट, हार्ट का मतलब दिल। लेकिन एक बंदा होता है, जब जवानी में जो चीज धड़कती है वो दिल है, और बुढ़ापे में जो धड़कता है वो क्या है? हार्ट है ना, क्योंकि हार्ट अटैक होता है उसमें। सो अभी क्या है कि धृतराष्ट्र हमेशा कहता था, अरे विदुर बताओ मैं क्या करूं, प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो विदुर ने उसके पहले ही बोल दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। दो वर्ष बोले, उसके बाद बोला आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्या है? प्रतिक्रिया न यस्येहु कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभु स एष भगवान कालः सर्वेषां न समागतः। कहते हैं प्रतिक्रिया न यस्य है, कुछ नहीं कर सकते आप। पहले बोला कि आप देखो समय क्या है? काल है परम दुस्तर। पहली क्वालिटी क्या है टाइम की? इट इज इम्परसेप्टेबल है ना। क्या नाम क्या बोला था उसको? अभिज्ञान। दूसरा क्या है? दूसरी क्वालिटी क्या है? फियर। अभी इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो फियर आपके पास आ रहा है इसका आप कुछ नहीं कर सकते, मौका ही नहीं दिया बोलने का। क्या बोल रहे हैं? दिस frightful situation cannot be remedied by any person of this material world। और क्या बोला? स एष भगवान कालः। थर्ड क्वालिटी ऑफ टाइम क्या है? इट्स भगवान। सर्वेषां न समागतः। सारे लोगों पे जो समय है भगवान है। और भगवान क्या है? कहते हैं इति मत्मा भजन्ते माम बुधा भाव संगीता। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दैट वर्स? अहम सर्वस्य प्रभु। भगवान बोलते हैं ना अहम सर्वस्य प्रभु। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि स एष भगवान कालः सर्वेषां न समागतः। हर चीज को पकड़ लेता है ना भगवान। सो थर्ड क्वालिटी टाइम की क्या होगी? भगवान है, हर चीज को कवर करता है। श्रील प्रभुपाद एक बार वहां थे फ्रांस में, है ना। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो वो क्या बोलता था? फ्रांस इज मी, आई एम फ्रांस एंड फ्रांस इज मी। क्या बोलते थे? आई एम फ्रांस इज नेपोलियन एंड नेपोलियन इज फ्रांस। ये उनका सेंटेंस था, उसको नेपोलियन बोनापार्ट का। श्रील प्रभुपाद फ्रांस में जाके फ्रेंच लोगों को लेक्चर देते थे। क्या बोलते हैं कि नेपोलियन बोलता था फ्रांस इज नेपोलियन, नेपोलियन इज फ्रांस,
फ्रांस तो इधर है, तुम्हारा नेपोलियन किधर है, ऐसे बोला। अमेजिंग, थिंक अबाउट इट। शिला प्रभुपाद एक सेंटेंस में ही इज टेलिंग देम दैट समय आई और हरती का कुछ समय क्या करता है, इट विल टेक अवे एवरीथिंग। नेपोलियन, जब नेपोलियन नहीं रहा तो फिर हम लोग की क्या औकात है। नेपोलियन बोनापार्ट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, यू नो, सबसे बहुत बड़ा शहंशाह था वो। उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बारे में सुना होगा। औरंगजेब ही वाज द रिचेस्ट। अभी कौन है रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड का? इलॉन मस्क है ना। इलॉन मस्क है ना, तो ये चेंज हो गया। यू डोंट नेवर नो यार, रोज रात को कोई ना कोई नया चेंज हो गया। ओके, एनीवे, वो मेरे ख्याल में ट्विटर के कारण गया हुआ है ना। एनीवे, व्हाटएवर। सो उस वक्त 1600 में जो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन था वो था औरंगजेब, ठीक है। उसने क्या करा, उसके पास इतना पैसा था, जितना पैसा जितने भी राजा थे पूरे वर्ल्ड के उनको मिला लो, उससे भी ज्यादा पैसा इस अकेले राजा के पास था, ठीक है। दैट्स हाउ रिच ही वाज। फिर क्या हुआ, लेकिन जब वो मर रहा था, व्हेन ही वाज डाइंग, उसका आजम शाह करके उसका बेटा था, आई थिंक इज द थर्ड सन और समथिंग। आजम शाह को उसने क्या बोला मरते वक्त, कि फिर क्या हुआ क्या कि ही वाज उसमें था, क्या बोलते हैं, इसके 3 लाख, इसकी सेना में 3 लाख सोल्जर्स थे, 3 लाख। क्या हुआ, मराठा ने उनको पकड़ लिया और उसको एक उधर पे उसको वो करना था, चढ़ाई करनी थी। 22 ईयर्स उसने कोशिश करी, लेकिन मराठों ने उनको घुसने नहीं दिया, है ना। उस 22 ईयर्स में आप सोचो 3 लाख सैनिकों का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनाना डेली, उसका पूरा खजाना खाली हो गया। बाय द टाइम ही डाइड ही हैड नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं बचा। अपने बेटे को क्या बोला जब मर रहा था, देयर इज अ गाय हु रोट हिज बायोग्राफी, हिस्टोरियन है, नाम मैं भूल गया उसका, ही रोट कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, एम आई, मैंने क्या करा जिंदगी में, है ना। कहाँ मैं दुनिया का सबसे ज्यादा वो था, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं ऐसे मर रहा हूँ कि मेरे को कुछ पता ही नहीं है। एंड ही डाइड, एंड दैट वाज हू, ही वाज द richest person in the world 1600s में। तो how many of you have seen आनंद मूवी? आनंद, बहुत सारे लोगों ने। आनंद मूवी को डायलॉग था ना, I would say, बाबू शाह, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर ना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतली हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कम कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता, हा हा हा, एंड ही डाइज। बट है तो बॉलीवुड का, लेकिन इट्स सच ए बिग थिंग। सोचो ना कि हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में क्या है, व्हाट इज इन आवर हैंड? कर्मा, हमारी डिजायर है, हमारी कर्मा, दैट्स आर द टू थिंग्स इन आवर हैंड। अगर हम उसको ढंग से नहीं करेंगे, देन वी विल हैव 3, जो 3 एस्पेक्ट्स हैं टाइम के। पहला क्या था, अविज्ञाना, क्या था उसका मतलब, इनपरसेप्टेबल। दूसरा फियर, और तीसरा इज भगवान, ही इज इनकम्पासिंग एवरीथिंग। लेकिन भगवान भी 2 तरह का होता है। डिवोटीज के लिए भगवान क्या है, इज फादर। बट नॉन डिवोटीज के लिए क्या है, काल। काल, वैसे काल के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो टाइम और दूसरा क्या, मृत्यु, है ना। उसके बाद क्या हुआ, तो पहले धृतराष्ट्र ने बोला कि तुम्हें जल्दी से निकलो यहाँ से, घर छोड़ के जाओ, देखो तुम्हारे चेहरा देखो कैसा हो गया, एकदम डरे डरे रहते हैं। हरे कृष्ण वर्क कर रहा हूँ, हरे कृष्ण। देन ही सेड नाउ थर्ड क्वालिटी भगवान हो गई। एंड देन ही सेड येन चैवा विपन्नोयम प्राणे प्रियतर मेरिप जन सद्यो विजयेत किमुत धन्य दादगी। अब क्या बोल रहे हैं कि जो भी भगवान, whoever is in the influence of supreme काल, है ना, must surrender to the most dear life, and what to speak of other things such as wealth, honor. So fourth quality क्या है, time devours everything, eats away everything. अभी तो he is really scared now. First was, what was the first one?
Avignat, that means imperceptible. Second is fear. Third is God, Bhagwan. Fourth is devours it. So this is the fourth quality of time. And then he says, Pitra Bhrata Suhrit Putra Ataste Vikitam Vayam Atmacha Jarya Drastha Paramake Umapasate. Then he says, your father, your brother, everyone is dead. Everyone is gone. Nobody is there. And you look at you. You look at you. You've lost everything as well. You are old, you know. And then he says, now you can't even do your own work. You're dependent on people to feed you. And then he says the last one, second last one. He says, Andaha Pureva Badiro, Madhya Prakyasha Samprata, Vishena Danto Madagni, Sara Gakapa Mudyanam. Kya rahe ki, pehle to tum andhe ho, Andhe Purev Badiro. Initially, you were blind. Now you're deaf as well. You were blind from birth. But because of your karma, you're deaf now. You can't even hear when I say all those things. Then he says, Mandhe Pragya Samprataha. He says, recently, because I'm telling you all of these things, now you can't even hear it. And Vishir Danto Mandagni, your mind, memory is weakened now. And you're coughing. He was coughing continuously because you're coughing as if it's a musical note, continuously coughing, continuously. It looks like it's a sargam, saraga. And then he says the last words, which was like a last blow on Dhritarashtra. What is it? Aho mahi yasi jator janto jantor jivitasha yatha bhavan. Bhima pavarchitam pinde mahadalne grah palvat. Kya bol rahe hain? Aho mahiyasi. Oh, powerful. Mahoyasi. Unko kya bol rahe hain? He is calling him powerful. He's calling him powerful and he's saying, you are living grah palvatam. Kya rahe hain ki you are who? Aapko pata hai kisne who killed all the sons of Dhritarashtra? Who killed? Bhima, hai na? Bhima. So यहाँ पर Vidura using Bhima. कैसे? He's saying you're living with Bhima. उसके टुकड़ों पे पल रहे हो. He's giving you his remnants of food, throwing at you, and you're living in Bhima's house as a dog. Grahapalva. Grahapalva का मतलब it's God, dog. You're actually living at his house as a dog. When people get desensitized now, because Vidura has been telling him for so long, but now he can't understand anything. Because Vidura is what? Manda Buddhi. He's so attached to his son that he couldn't understand anything. So now he's calling him the last blow. He's calling him a dog. He's calling him a dog. And then he says, you're a dog, just leave the house. Just completely leave the house right now if you don't want to be a dog. So that's the time. So he's telling him the time because you are not devotee. You haven't devoted your life to spirituality. What's happening with you is you're scared. Now you have to leave and you're a dog. And this was it. And I think this is the reason why actually Dhritarashtra leaves. Now what happens is sometimes you become desensitized. There is a game called PUBG in India. Why was it? It was banned by government. I don't know, but it was banned. Why was it banned? Because it was you're killing people. You become desensitized. I have no compassion for anyone. So what happened? Vidura was telling him that you're desensitized. That's why I have to do because if it's a major, बहुत बड़ी चोट लग जाती है. What do? They operate. They have to make a bigger cut. So what Vidura is doing, he's cutting him. He's operating because he tried everything. Now he has to try. And that's why he said that. The funny thing is, there's a clock here. Clock for a child works differently to an adult. When a child, chota bacha
क्लॉक को देखता है, क्या कहता है, मेरा बेटा कहता है, पापा, when are we going to do Christmas presents? He's thinking the clock is running very slow. But if you ask an older person, he goes, come on, thamja bhai, thamja. You know, everybody, older people want the clock to be slowing down. And Dhritarashtra, what he did all his life is, he has only one dream. What was his dream? What was Dhritarashtra's dream? To become king. That was his dream, to king. And because he couldn't be the king, he wanted his son to be the king. So, you know, have you seen those kids making sandcastles in the beach? They make sandcastles and then a wave comes and takes away, the whole sandcastle is gone. And the people, you know, under the umbrella, the parents, they're drinking, you know, their cold drinks and stuff and laughing at the kids. And kids are crying, oh my goodness, I lost my castle. We do that, yeah? But if you think about it, we are the same. You know? The kid is making a smaller sandcastle and we are making a big one. You know, kids, in 2 minutes, their dreams are shattered and they're crying and they move on. But our dreams, a 30 years mortgage, 30 years of mortgage. So we are exactly the same. Now, we will, now having heard this, let's look at what are the 5 things again. What are the 5 time qualities? First is imperceptible, avignat. Second, fear. Third, God, Bhagwan, that means he's everything. Fourth, devours everything. Fifth, encompasses everything. That's it, the 5 of them. Now you know how important is time. So what we'll do now is we'll talk about why should we make New Year resolution. We touched on it anyway. So we'll do a little bit more. So I spoke about performance reviews, you know. And so in GPS, suppose in GPS you want to go to St. Kilda Beach, for example. You put St. Kilda Beach on the GPS. If you don't put current position, what will happen with the GPS? Would it take you anywhere? Why not? Why won't it take you? Doesn't know where we are. You know? So first of all, we need to know where we want to go in our life. We need to know our destination. Then we need to know where we are currently. The only way you can find out where you are currently is what? Do your life stock take. We spoke about it. No? Life stock take means you find out where am I? How much am I in my material life? Am I where I want to be? In my spiritual life, am I where I'm going to be? If not, what can I do? So the only way you can do it is every Sunday take a life stock take. Life ka profit and loss life statement. What you do is you write down where we are right now. There was a Hindi क्या बोलते हैं उसको? What do you call that? शेर. तजुर्बा हमें गलत फैसलों से बचाता है. तजुर्बा हमें गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन तजुर्बा गलत फैसलों से ही आता है. तजुर्बा गलत फैसलों से आता है. What does it mean is experience prevents us from making wrong decisions, and experience comes from making wrong decisions. But for who? Intelligent person does not wait to make a wrong decision. They look at someone else, he made a mistake, I won't do it. Then, now, so exercise for all of you is today, 1st of January 2023, go home, write down your life stock take. What I did 1 week, only for 1 week. You don't have to do for the whole year. If you want to do it for the whole year, do it. But 1 week, what did I do? What is the best thing? I've written down a few things in here. Write down. If किसी को चाहिए होगा, come and see me after this. I'll give you the few things that I've written down. What is the highlight of this week? What did we learn this week? What is the one thing that I'm proud of this? And what is the one thing I'm very disappointed about? And what would I do differently?
in the coming week. If you write this down, one line each. Na? Jay Shetty, I was listening to a podcast of Jay Shetty. He was saying, if someone wants to have solid financial, if you want to stay rich, na? There are 3 things you have to do. First is, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. I'll repeat. Do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. It's a small little twist in there. But if you do this, your financials will be strong. Second, he says, do not go broke trying to look rich. What does that mean? Show off, no show off. You know? Do not go broke trying to look rich. And the third one is, you can't manage what you don't measure. Norman Kelly actually said that. So Jay Shetty was repeating it. What? You cannot manage what you don't measure. We measure our performance at work, but we don't measure our performance in life. So when you do a stock take, you will start managing. You start measuring your life, and then you can manage it. Once you start measuring, then you can manage it. Otherwise, you can't. And so that's one thing. So why do we have to do New Year resolution? So that we can do a stock take. Simple. That's the one thing. So now, why most New Year resolutions fail? Second topic. So Chaitanya Charan Prabhu was talking about this. Any New Year resolution, kya hota hai? There is an inspiration. You can be inspired. It's a sudden burst of energy. You get, oh, you know, I have to do this. I want to do this. I want to achieve this. I want to paint. I want to do this. I want to get slim. I want to go to the gym. All these things, like, you know, you get inspired by something. But kya hota hai? After 1 week, what happens? You know, I can do it. I can do 1 day without it. It's okay. So there is one inspiration. Inspiration is a very small, short duration. It comes from emotion. You're emotive about something. You know, right now I'm feeling really lovey-dovey with my wife. You know, but tomorrow, when something is not going well, all the love goes down the drain. Because at that moment, I had emotion inspired by something. You know, I was saying good things to my wife. Now I'm not. Now, second thing, which if you want to have the constant inspiration, you need second thing, which is conviction. And conviction kahan se aati hai? Where do conviction come from? Intelligence, rationality, logic. You know, if I'll tell you, my family has a history of diabetes and stuff. You know, so but I love my tea, like Rooibos tea with a lot of sugar, like 2.5 spoons sugar, and I have like 2 or 3 teas in a day. And so I wanted to quit sugar for a while, long time, but I couldn't because I was inspired to do it, but I was not convinced. Then I watched a documentary from one of the guys in New Zealand. After watching that documentary, that was 5 weeks ago. I haven't had a drop of even 1 grain of sugar since then. Because what happened? My logic, my rationale told me, nah, you can't do it anymore because I have a history of diabetes and all those sort of things. And I stopped it completely. Because what happens is I went past my emotions. I went to conviction. You know? And how you can do this is, the reason why we can't do it, we don't get conviction is because we have contaminated desire. You know? You want to get up in the morning, let's do chanting. And something in your head says, you know, 10 minutes more, sleep for 10 minutes more. And as soon as you tell yourself 10 minutes more, what happens is, if your logical mind is not telling you something, you sleep. Logical mind kuch nahi bola, you go to sleep again. But if you're convinced there is the highest, you know, you get 99% of your total spiritual advancement comes from what? Chanting. 99% of your spiritual advancement comes from chanting properly. You know? If you are emotion mein, you can do it. You can get up early in the morning, 1 day, 2 days, 3 days, 4 days. But if you're not convinced that this is the highest service that you can do, then you won't do it. So conviction comes from what? Logic, rationale, and problem is these logic and rationale will not come until we have anarthas.
If you want to paint, if I want to paint this bookshelf, if it has oil on it, I can't paint. Or it is wet. So they said, you wipe it off first before you do the paint. Same with us. If you want conviction, what we need to do is we need to get rid of our anarthas. And what is the best way to get rid of anarthas? Chanting the holy names of the Lord. And Nityam Bhagavad Sevaya. Nityam Bhagavad Sevaya. So if you read Srimad Bhagavatam every day, you will get rid of those anarthas. And Chaitanya Charan Prabhu gives a very good example. If this plane is like this, if I put water in it, it will go that side. If I don't want water to go this side, what do I have to do? Change the inclination. And inclination is the word used for our anarthas, our what do you call it? Our nature. That's our inclination. Unless we change our inclination, we will not be able to do this new resolution at all. And the problem is we cannot get rid of anarthas if we are wasting time. Anarthas ko hum log nahi kar sakte unless we are wasting time. So there was this guy who was dying. So Yamaduta came and said, "Hey, time for you to go." He was a big merchant, and he said, he was billionaire. He said, "Oh, I can't go now. I have this responsibility, that responsibility." Yamaduta said, "No, you can't." He said, "Okay, take all my money and give me 2 hours." He said, No, that's not going to work. He said, "Okay, take all my properties, give me 10 minutes. He goes, "Nah, it's not going to work." He said, "Okay, take everything that I have earned, not spiritually, actually, everything that I've earned, punya, take all of that. Give me 2 minutes." And then he thinks, what is he going to do in 2 minutes? Yamaduta says, "What is he going to do?" He said, "Okay, take 2 minutes." You know what he does? He goes, takes a pen and a paper, and he writes. He writes. This is he writes. "Spend your time, which was given to you, in the right way. I couldn't buy even an hour of life with all my wealth." So he says, listen to your Guru, Sadhu, and Shastra, and check if the things surrounding you have true value. And then 2 minutes are over, Yamaduta takes it. And all his family gets benefit because he wrote that. So what does it mean is, there is nothing we can do. Time waste karne se, if we waste our time, there is no point making a new resolution if you don't understand the value of time. And Bhagavad Gita says, "Vyavasayatmika buddhi eke kuru nandina." What does that mean? If you look at our new resolution, if we have a list of, I've got a staff member, he had a list of 64 things he wants to do in 2023. 64 things. How many do you think he can do? 64 things. Okay. And out of that, 23 are on a daily basis. 23 things he wants to do daily. Not possible. Vyavasayatmika buddhi ekehu guru nandana. Bahushaka hi anantasya buddhya vyavasayana. So this is we have this magnifying glass. If I put this in the sun, it won't burn. But if I put a magnifying glass, what happens is it can burn in a little. How? Why? Because of Vyavasayatmika buddhi. Because what pointed, I focus all the energy into one thing. So the best thing you can do for new resolution is have baby steps, small goals for yourself. Take baby steps. Don't rush in on it. So, and there's another thing which is, so we'll just do the recap and we'll let you ask any question if you have. So recap is time. What is the quality of time? One is time is avignan, which is imperceptible. Dusra, what is time? Fear. Third, time is Bhagwan, God. Fourth is time embraces everything. Fifth is time snatches everything. So what we have to do is do appraisal, life appraisal. Do stock take of your life on a weekly basis.
And when we chant properly, what will happen is our anarthas will go away, and very resolutions that we make will stick to us. And then there is one of the things that my brother in India was asking me. He was asking me, how do I get up early? How do I get up? He wants to get up early. That's his New Year resolution. And I told him, don't make a resolution. He's been trying for a year to get up early. He's not. So I told him, don't make a resolution to get up early. Make a resolution to go to bed early. That's it. For 1 month, 2 months, just make a resolution that 8, 9 o'clock, I'm going to be sleeping. That's it. Make a very good schedule for sleeping early. And then getting up early is the next step. What we try to do is we try to get up early. We don't plan for the night, we try and plan for the morning. And that's why it doesn't stick. So that's another thing. And then there's a story, I'll end with this story. There's this hawk. There was this hawk. When he was little, the egg of the hawk was left in a chicken coop. And then what happened is, when the egg hatched, all the chicks were there. So all this hawk grew up like a chicken. He will eat the grains. He will walk like chicken. He will, speak like chicken. And one day the hawk saw a big, massive hawk flying really high. Then he asked the chicken, "Hey, what's that?" And he says, "Oh, that's a hawk." He said, "Looks like me." He said, "No, you're a chicken." And this hawk goes, "Okay." He started picking up his grains. What does that mean? What does that tell us? What does that teach us? That teaches us we all are like hawks. We have capacity of a hawk, spiritual capacity of a hawk. But what we are doing is we are becoming like a chicken in a material world. And we have friends like this chicken who's telling me that I'm a chicken, but I'm a hawk. And that's why what we need to do is we need to have right association. And this is the perfect association that we have. So there are a few things we need to do is take a stock take of life, have really good friends who can actually concentrate on who you are rather than and where you want to be, rather than always telling you what you want to hear. Okay. We'll stop here. Shri Prabhupada ki jai. Anybody has any questions, comments, anything anybody wants to share? Yeah, Hawk. Yes, you're right. Yes. Yeah, you're right. Absolutely right. And you know what? There is another thing that I heard for the corporate world. Frogs. When the frogs are transported from one place to another, they are put in a bucket, but they don't put a lid on it. You know why? Because one frog tried to jump out, other frog brings him back. So they don't need a lid for that. And that's what we do in material world as well. How is this guy going up? We'll tell his boss, you know what? He's such a rascal. He does this. And the boss goes, "Oh, I was going to give him promotion. I'm not going to give him promotion." Why? Because I'm being like a frog. So that's a frog mentality. Thank you, Prabhu. Thank you for sharing. Anybody else? No? Okay. Shri Prabhupada. Oh, Mother, yes. Ask. Huh? Yes, I will share. Thank you. Shri Prabhupada. Hare Krishna.